આજે સુરત પહોંચતાની સાથે જ વહેલી સવારથી દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓના ખેડૂતો જોડે મારે મળવાનું થયું છે. આજે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને એમને બી આ બેઠક વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી લઈને ગુજરાતના તમામ ક્ષેત્રના ખેડૂતોને થયેલી નુકસાનીનો ત્યાગ મેળવ્યો છે. જે દિવસે અડધી રાત્રે આ ભારે વરસાદ ચાલુ થયો, વહેલી સવારથી જ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી દ્વારા તમામ મંત્રીઓને ફિલ્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા. તમામ વિભાગોને એમને ત્યારે જ સૂચના આપી કે વધુમાં વધુ ખેડૂતોની સાથે રહીને કઈ રીતે મદદગાર થઈ શકાય તે દિશામાં કામગીરી ચાલુ કરી લેવી. હજી તો વરસાદ બંધ બી નહીં થયો તે પહેલા આખું તંત્ર, સૌ મંત્રીઓ એ તમામ ખેડૂતોના સહયોગમાં સાથે ઉભા રહીને કામગીરીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આજે બી તમામ વિભાગને કહ્યું છે કે તમામ લોકોનો સંપર્ક કરીને ઝડપથી તમામ ક્ષેત્રમાં ખેડૂતોને થયેલી નુકસાનીનો આંકડો તૈયાર કરીને આવનારા દિવસોમાં ઝડપથી તેમની સાથે કઈ રીતે સરકાર ઉભી રહી શકે તે દિશામાં રાત દિવસ એક કરીને કામ કરો અને વધુમાં વધુ મદદ પહોંચાડવાની ભાવનાથી મુખ્યમંત્રીશ્રીએ, જો ભૂતકાળનું તમે જોશો તો ગુજરાતમાં જ્યારે જ્યારે ખેડૂતોને કોઈ બી આફત આવી તો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી દ્વારા એમના હિતમાં નિર્ણય લેવાયો છે અને આ વખતે બી તેમની સાથે, તેમના સહયોગમાં, તેમના હિતમાં નિર્ણય લેવાશે. આભાર. किसानों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन दिया गया है? गुजरात में अनटाइमली भारी बारिश के कारण करीबन 250 जितने तालुका में किसानों को भारी नुकसान होने के कारण मुख्यमंत्री जी ने भारी बारिश जब चालू थी तभी सभी मंत्रियों को तात्कालिक अपने अपने क्षेत्र में जाके किसानों के साथ रह के उनकी तकलीफों में सरकार कैसे ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर पाए ऐसी सूचना दी थी. पिछले दिन से हर रोज हर सेक्टर्स के किसानों को क्या नुकसान हुआ है, कितना उनका पाक जो निष्फल हुआ है उसकी माहिती वो स्वयं ले रहे हैं. आज भी सुबह मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग किस प्रकार से पहुंचा पाए उसके बारे में बैठक ली थी और सभी अधिकारी एवं मंत्रियों को सूचना दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा अपने किसानों को उनके साथ खड़े रह के उनको मदद पहुंचानी है. उनके दुख में ये दुख हमारा दुख है. ये सभी किसानों के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और सबको ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे पहुंचाई जाए वही दिशा में काम चल रहा है. किसान काफी उससे उत्साहित भी है. देखिए, ये हमारे भाई हैं. गुजरात एक परिवार है. ये दुख के समय में उनके साथ खड़ा रहना ये हमारी जिम्मेदारी है. और खास तौर पे मैंने जो कहा है, यहाँ पे जो सिंचाई मतलब पानी की जो नहर है जहां से कैनल से पानी आता है, वो कैनल का रिपेयरिंग का टाइम जो आने वाले 3 महीने में होने वाला था, क्योंकि ये साल किसानों को नुकसान हुआ है. ये बारिश की जो सीजन का जो उनका जो क्रॉप है वो ऑलरेडी फेल हुआ है, तो ये नेक्स्ट सीजन में काम कर पाए उसके लिए ये रिपेयरिंग का जो काम है वो आने वाले साल में मतलब अगले साल में कैसे किया जाए उसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं अपील करूंगा. और मुझे पूरा विश्वास है
कि किसानों के साथ हर हमेश खड़े रहने वाली ये सरकार ये भी निर्णय उनके हित में करेगी। हर्ष भाई, एप्लीकेशन जो बनाई है कहीं भी दिक्कत आ रही है किसानों को? किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो वो तुरंत ही हल किया जाएगा। સમજી શકે બરાબર છે. એ દુઃખ